Hello, namaskar to everyone. Today I'll tell you about Joule's heating effect. Now, before I introduce you, there are so many heating appliances are in your house, uh, like heater. You can take an example. Now, let me know what is physics involved in it. Let us begin. Consider a resistance. Resistance is AB. AB is a resistor whose resistance is R. The potential difference across this resistance is V. A current I passes through it. Okay, so all three parameters you consider again. Once again, we take a resistor AB of resistance R. The potential difference across the resistor is V and a current I flows through it from A to B. Now, let in time t, how much charge flows? In time t, charge flows is how much? You can write Q is equal to current I into T. Okay, this is a simple formula. You know very well. Q is equal to IT. So this much charge flows for time t. Now if somebody will ask you what is work done or what is the energy required in this process, the work done W is equal to charge into potential difference. So charge is Q, potential difference is V. So this is work done, QV. Q you can replace by writing IT into V. So you can rearrange this. This you can write V, this is potential difference, I, this is current, and T, this is time. So this much work is done if charge flows. Now, the energy required in this work done is totally converted into heat. No, it's natural, no. If work is done, it means energy is required. So whatever the formula for work done, the same formula is for energy. So if somebody will ask you, what is energy required? Same you formula tell here, VIT. What is work done? VIT. There is no problem at all. So, energy required in this transfer of charge, if it is converted into heat, then energy is also written as VIT. If this energy is converted into heat, so heat will be, you have to write one line, if this energy is converted into heat, then heat produced is how much? H is equal to VIT. Okay? H is equal to VIT. V you can replace by using Ohm's law. So what is H? So H you can write here. So just now we have
got that H is equal to VIT. So this formula you can change by replacing V using Ohm's law. The V is equal to IR. So this formula can be written as I square RT. This is known as Joule's formula for calculating heat. Joule's formula. Joule's formula for calculating heat. Heat is equal to I square RT. So see, on how many factors heat produced depends. Naturally, the formula will suggest to you that heat depends on current, heat depends on resistance, and heat depends on time, duration, how much time you are allowing current to pass through a resistor. Now, so on the basis of this formula, we will write Joule's law. The Joule's law is divided into three parts. First, law of current. So how heat is related with current? The heat produced through a resistor is directly proportional to the square of current when resistance and time are kept constant. So this condition you must remember. Simply you don't write heat is directly proportional to I square. You have to write condition also. Because heat is directly proportional to I square with a certain condition. If you will not mention the condition, then your law will be sometimes false also. So first law is law of current. So what is law of current? Law of current. This is your first law. Mathematically, H is directly proportional to I square. But mind you, what other factors are taken here constant? This is resistance, R and T. R and T are constant. This you remember. R and T, these two are constant. Okay, this is first law, law of current. And second law is what? Law of resistance. Law of resistance. What the law suggests to you? According to formula you can write H is directly proportional to R. What is the condition for this law? You have to make other two parameters. That means your current and time. I and T are constant. Okay. I and T are constant. This is law of resistance. Then third law you can see here. The third law is, the third parameter is left what? It is T. You can write a law of duration or law of time. Law of time. Third, H is directly proportional to T. What are constant? What are the conditions? The condition is if I and R are constant. So you have seen there are three laws for heating effect of current, and this law is known as Joule's law of heating effect. Okay, now so you pause the video and write all three laws. Now, once more, H is equal to I square RT. This is one of the formula. The first formula, before this, the formula was what? If you remember, this is V into I into T. Correct? One more formula, sometimes you can replace I also. This is B square divided by R into T. So all three formulas are there. H is equal to I square RT. H is also equal to VIT, which you have seen earlier. And this is V square by R into T. So all three formulas are there. Now this is heat. Can you tell me what is power?
तो पावर इज इक्वल टू the earlier formula, power. So power P is equal to energy by time. That means rate of consumption of energy or rate of generation of energy or rate of work done or other definition for power. So what is the formula for power? If you place all three formula, you will get different unit, the different formula. If you write energy in this form, then your power formula is I square R. If you write energy in this form, the power's formula is VI. If you write energy in this form, the power's formula is V squared by R. So all three formula for power. So once more I am rearranging the three formula of energy, heat energy, and three formula for power. So power's formula first, P is equal to VI, P is equal to I squared R, P is equal to, what is there? P is equal to B squared by R. Okay. अब ये तीनों फॉर्मूला आपके पास है एक ही, लेकिन तीन डिफरेंट रूप में. एक चीज मैं आपका आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन. इफ somebody will ask you that how power is related with resistance, now look at carefully. P here, P is directly proportional to R, and here P is inversely proportional to R. Now you will be sometimes confused. So what relation exactly there is? If one of them is right, if both are right, if both are wrong, so you will be sometimes confused. How you can relate power with resistance? This formula tell you power is directly proportional to R. This formula tell you power is inversely proportional to R. My dear students, clear your confusion that both the relation are correct, but the condition you look at here. Power is directly proportional to R when current I is constant, and power is inversely proportional to R when potential difference is constant. Okay? Power is directly proportional to R when current is constant, and power is inversely proportional to R when your potential difference is constant. So this confusion you never keep. Both relations are okay, but their conditions are different. So condition you have to remember. तो अब याद करो, in series combination current is constant, so this formula normally used in series. And in parallel combination potential difference is constant, so this formula is normally used in parallel combination. But all format of all three formula are same. Okay, so don't be confused. So power, if you will be asked how power is related with resistance, you answer both. Power is directly proportional to R when I is constant, and power is inversely proportional to R when V, that means potential difference, is constant. Okay. Now you come here in your domestic सर्किट particularly, we'll talk about bulb. तो आप बल्ब तो देखे भी होंगे कि बल्ब जो आजकल एलईडी बल्ब आया है, और जो पहले फिलामेंट बल्ब आता था उसमें 60 वाट, 100 वाट, 30 वाट लाइक दैट अभी भी मिलता है. तो सपोज करो कि हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब है B1 और एक बल्ब है B2. ओके, B1 है 60 वाट और B2 है 100 वाट. Okay, so you are given two bulbs, 60 watt and 100 watt. Somebody will ask you, tell me whose resistance is more? Is it 60 watt or is it 100 watt? Okay? तो इसका आंसर करने के लिए अब आप गौर से देखें
कि हमने अभी बताया कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस से कैसे जुड़ा हुआ है। तो दोनों रिलेशन हमने बताया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस दोनों बल्ब में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो ये पता करने के लिए एक और चीज़ आप देखना, उस बल्ब पर लिखा रहता है 220 वोल्ट, और यहाँ भी लिखा रहेगा 220 वोल्ट। अब ये देख के आप कंपेयर कर सकते हो क्या चीज़ कांस्टेंट है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। दैट मीन्स व्हाट? देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो कौन सा रिलेशन लेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो आप फिर पीछे का फॉर्मूला याद करो, P इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला था I स्क्वायर R और एक फॉर्मूला था V स्क्वायर बाय R। ओके, तो V जब कांस्टेंट हो तो पावर और रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स द बल्ब हुज पावर इज मोर हैज लेस रेजिस्टेंस एंड द बल्ब हुज पावर इज लेस हैज मोर रेजिस्टेंस। तो अब बताएं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ? B1 का। ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ? B1 का। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको आप जरूर करना कि मान लो कि आपके पास एक बल्ब है, दिस इज बल्ब हियर 100 वाट का, ओके, और 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट 100 watt. It is mentioned, marked on the bulb, 220 volt 100 watt. If you give 220 volt, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप 220 वोल्ट से इसे कनेक्ट करोगे तो ये 100 जूल पर सेकेंड का एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके, इफ यू कनेक्ट दिस 220 वोल्ट तो यह 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा, बेटर टू राइट कन्वर्ट करेगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं कंज्यूम करेगा। चलो कुछ देर के लिए आप समझ लो कंज्यूम करे। If you apply 220 volt, then it will consume 100 joule per second, that is 100 watt. My question is, if the same bulb connect with a 110 volt of a source, 220 वोल्ट ना जोड़ के हमने क्या किया, 110 वोल्ट हमने कनेक्ट किया, तो यह कितना पावर कंज्यूम करेगा? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन वाज, बल्ब, एक बल्ब है, इट इज मार्क्ड विथ 220 वोल्ट 100 वाट, इट इज कनेक्टेड विथ ए सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय द बल्ब? इज इट 100? ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। ऑप्शन ए है 100 वाट, ऑप्शन बी है 75 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट एंड ऑप्शन डी है 25 वाट। ओके, सो 25 वाट, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट एंड 25 वाट। अब जो ऑप्शन आपको सही लगे आप इसको बनाना। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दिस वन। एक तो ये हुआ। अब हम थोड़ा घर की ही बात करें कि एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी is equal to power into time. सिंपल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब एनर्जी का नॉर्मल यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट, जूल। एसआई यूनिट हुआ आपका जूल, दैट यू नो। अब इस फॉर्मूला को देख के हम यूनिट बनाते हैं।
तो पावर का यूनिट होता है वाट, और टी टाइम है तो इसका यूनिट होता है सेकेंड। तो एनर्जी का यूनिट वाट सेकेंड भी होता है। तो 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। नो प्रॉब्लम, 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। थोड़ा और बड़ा बना लो, 1 वाट आवर इज इक्वल टू, सेकेंड की जगह हम आवर कर दिए, तो यू नो दैट इन 1 आवर 3600 सेकेंड इज देयर, तो ये हो जाएगा 3600 जूल। ओके, फिर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, देखो किलो का मतलब 1000 होता है, वाट आवर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। किलो मीन्स एवरी टाइम 1000, किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर, so kilo for 1000. So what you will do here? So if you see, this is 3.6 into 10 to the power 6 joule. This kilowatt hour is actually in commercial purpose, the kilowatt hour is termed as 1 kilowatt hour is termed as 1 unit. Is 1 unit. Okay, this is a commercial unit of electrical energy. जिसे आप घर में बिजली का बिल आप जमा करते हो, तो हम लोग पहले पता करते हैं कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ। तो यूनिट इज फॉर किलोवाट आवर, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ओके, सो दिस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हुआ ये भी आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू डील हियर, सपोज वन क्वेश्चन इज गिवन, you are given a bulb of 60 watt and it glows for 2 hours. So somebody will ask you what is energy consumed. So you can calculate energy consumed for 2 hours is, as you know, energy is equal to power into time. So what is power here? 60 watt. What is time? 2 hours. So in total, what is there? 120 watt hour. Okay, 120 watt hour is energy consumed. This you can convert in joule also. तो वाट आवर को जूल बदलेंगे, दैट इज वाट सेकेंड बदलो, तो इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई करके जूल में भी आंसर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़े, तो सपोज करोगे 120 वाट आवर, एक दिन में 2 घंटा अगर हम बल्ब जलाते तो खर्चा होता एनर्जी का, तो एक महीना में कितना हो जाएगा? तो इफ 1 मंथ यू आर आस्क्ड सेम बल्ब फॉर 1 मंथ, तो मान लेते हैं 1 मंथ 30 डेज का है, कोई 31 भी होता है, 28 29 भी होता है, मान लो 1 मंथ हम 30 डेज मान लिए। So what was the energy for 1 month? So energy now is equal to 120 watt hour into 30. So कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? 3600. Okay. So what is that? अब इसको हम, ये वाट आवर हुआ, इसकी यूनिट क्या होगी? वाट आवर। अब इस किलो बनाने हैं, तो किलो बनाने हैं, वाट आवर को किलो बनाने हैं, 1000 से डिवाइड करो, तो दिस इज इक्वल टू 3.6 किलो वाट आवर। सो दिस इज एनर्जी कंज्यूम ऑफ द सेम बल्ब इफ यू आर यूजिंग द बल्ब 2 आवर पर डे फॉर 1 मंथ, 3.6 किलो वाट आवर। और इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 3.6 यूनिट का। तो 3.6 यूनिट बिजली आपने खर्चा किया। अगर मान लो 10 रुपये के हिसाब से अगर बिजली का कंजम्पशन है, तो आपको एक महीना में 36 रुपये का कंजम्पशन होगा। सो इफ यू आर यूजिंग 60 वाट बल्ब, दैट्स व्हाई नाउ इट इज इन योर हाउस द एलईडी बल्ब इज यूज्ड। तो एलईडी जो है उसके पावर बहुत कम होता है, 9 वाट 12 watt like that
and you can save the energy as well as your money also by using LED devices, LED bulb. Now, one more question today I'll give you to think, and in next class we'll discuss. The question is actually, suppose करो कि हम एक ऐसे एक सर्किट बनाएं, डीसी सर्किट ही है, हमारे पास दो बल्ब है, B1, B2, ओके, और ये है 60 वाट का और ये है 100 वाट का. आपको ये बताना है कि इस केस में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा और क्यों होगा. Which one of them, which bulb glows brighter? Which bulb glows brighter? इस दोनों में 61 and why? And why? So two questions I have given you to discuss, and in next classes I will give the solution also, and I hope that you yourself will solve the answer. So thank you very much for today. इलेक्ट्रिसिटी का इतना तक आपको पढ़ना है, और आगे का क्लास जब भी हम लेंगे तो हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का या फिर पावर कंजम्पशन का कुछ बैठ के सॉल्व करेंगे. और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको इस नंबर पर अपना 9431472023 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे. एनी प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, then you can WhatsApp on this number. So thank you very much. You do practice, you read, and if any problem you convey me. I'll try to answer them either through WhatsApp or through YouTube classes. So thank you very much.